Okay, okay, so now it's good. Good to go. To live and sites open. तो लाइव आ गया नहीं, हाँ अभी आ गया वो लाइव, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ओवन ओवन ओवीएन से रिलेटेड, सो आज हम उसका ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ सकते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक। समझ रहे हैं? तो अभी चलने देते हैं इतना। हाँ, और कुछ करना है क्या? शायद आवाज मेरी आ रही होगी और सब गुड और लिस्टिंग इज सेट। तो ओपन करते हैं, स्टार्ट, ठीक। मेरी स्क्रीन वगैरह विजुअल है गाइस। ओके, परफेक्ट। तो अपन आज पढ़ेंगे ओबीएल ऑटोमेटिक सिस्टम, पहले सच मारते तो क्या है ओबीएन कुबरनेटिस ओबीएन ओपन हिस्ट्री में सर्च कर मैंने जो कल सर्च करा तो वो, ठीक है। तो एज हियर जैसे है मेंशन, देख लेते हैं जो पढ़ सकते हैं। ये है ओवीएन कुबरनेटिस आर्किटेक्चर इन ओपनशिफ्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ही हम पढ़ेंगे। तो हम एक बार इसको करते हैं ना। और तो क्या है, ठीक है। ये हमने कर लिया सेट, ठीक है। उसको लाइव बनाते हैं। ये है ना ओवीएन कुबरनेटिस नेटवर्क प्लगइन, ठीक है। ये 19 है, ठीक। ये स्टार्टिंग है 19 चैप्टर, स्टार्टिंग से प्लगइन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आर्किटेक्चर है, देखो। ये है एम्ब्रोलियो ऑफ 19.2 पे जाऊंगा ना, तो ये आर्किटेक्चर, इसके बाद आर्किटेक्चर है, ठीक है। पहले हम ये यहाँ पे नहीं, मैं इसको इसमें, हाँ यहाँ पे कंट्रोल एफ, फिर 19 पे, ठीक है। तो मैं पहले प्लगइन के बारे में पढ़ लेते हैं, प्लगइन क्या क्या नहीं है, ठीक है। The OpenShift container platform cluster used to virtualization network for the pod and services. किसके लिए यूज होता है? pod and services के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? for pod and services, virtualization network for pod and services के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्या है? The Red Hat, the part of Red Hat OpenShift networking, the OVN Kubernetes network plugin is the default network. क्या है? It's a network, is a default network provided by OpenShift container platform. OVN Kubernetes is the based on the is based with the OVN and provides the level overlay based networking implementation. A cluster that use the OVN Kubernetes plugin also run an open switch based on two technology based करता है, OVN एक OVS, open switch, open virtual switch, each for on each node. OVN configure OVS, OVN configure on OVS on each node.
ओबीएन जो है ना, ओबीएन कॉन्फ़िगर करता है ओबीएस को एक एवरी नोड ये चीज, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग द डिक्लेयर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन नोट, नोट में क्या दिया, ओबीएन कुबरनेटिस इज द डिफॉल्ट नेटवर्किंग सॉल्यूशन, ओबीएन डिफॉल्ट नेटवर्क सॉल्यूशन for OpenShift container as single node deployment and single node deployment के लिए OBN Kubernetes which across the which which across from the OBS project use many of the same construct such as open flow rules to determine how packet travels through the network. वर्चुअल वेबसाइट की उसमें भी देख सकते हैं कैसे ट्रैवल करता है, बट अभी हम उसको नहीं देख पाएंगे इसके ऊपर। The OBN Kubernetes is the series of the daemons of OBS that translate virtual network configuration into over OpenFlow rules. OpenFlow is the protocol communicating with network switches. OpenFlow is the protocol network switches routers provide a meaning of remotely controlling flow, networking traffic on a network device that can reduce step and configure the traffic. Yeah, OpenFlow. OpenFlow is a protocol for the communicating with the network switches and routers. For working with the networking, OVN Kubernetes provide more of the advanced functionality. OVN Kubernetes provide more of the advanced functionality. Provide more and advanced functionality not available with OpenFlow. OVN. OVN supports the distributed virtual routing. OVN support distributed virtual routing, distributed logical website, access control, dynamic host configuration protocol DHCP, and DNS, dynamic host configuration. OVN implements distributed virtual routing. OVN OVN implement distributed virtual routing within logic. OVN implement distributed virtual routing. Distributed virtual routing. OVN implement distributed virtual routing. Distributed virtual routing. Follow that equal to the open flows. For example, if you have pod that send out the DHCP request to DHCP server on the network, logic flow rule in the request help the OVN Kubernetes handle the packet so that the server can respond with the gateway DNS server, IP address, and other information. OVN Kubernetes run a daemon on each node. There are daemons set for the database and for the OVN controller that run on every node. The OVN controller program the open vSwitch daemon on the node to support the network provider features, ingress IP, firewall, routers, hybrid networking. So the OVN controller, the program purpose, its purpose, OVN Kubernetes purpose. The OVN Kubernetes network plugin is a open source, fully featured Kubernetes CNI plugin that use the open virtual network, manage the network traffic flow. OVN is the community developed
vendor agnostic network virtualization solution. The OVN Kubernetes network plugin uses the following technology. OVN to manage the network traffic flow, Kubernetes network policy support and logs, including the ingress and egress rules. The generic network virtualization encapsulation, the protocol rather than the virtual extensible LAN to create and overlay network between nodes, manage traffic and Kubernetes network ingress and relate network encapsulation. The OVN Kubernetes network plugin support the following capabilities. Hybrid cluster that can run both Linux and Microsoft Windows workload. The environment is known as hybrid network. Hybrid cluster that can run both workload and Windows and use offloading of network data processing from the host central processing unit. The compatible network cards and data processing unit. DPU. This knowledge
ठीक है, ठीक है, ठीक है। Bullard processing on the post central processing मतलब the customer setup of 2020. IPv4 primary dual stack network on bare metal. VMware vSphere IBM Power VMware a single stack networking on bare metal platform. Primary dual stack networking for the cluster running on the bare metal. Ingress fiber device and ingress IP address paired the ingress router. Kubernetes Kubernetes IPv6 Kubernetes network has the following limitation. Twisted dualistic networking, both IPv4 traffic must be seen. The only resolution 8 million negative one or the only electricity. Introduction of the programs. The architecture has no cloud formation, OVN, CMS plugin, OVN, not one DB, not one DB, not one, not D, southbound database control, not wait service. So we can't plug that shit. पहला वाला जो CMS है वो क्या है ये platform specific client that provide a CMS specific plugin for OVN integration. The plugin translates the cloud management system concept of logical networking configuration stored in the CMS configuration database in CMS. Directly feed forward into a intermediate representation understood by OVN process manager. A platform at specific client on OVN that provides CMS specific for OVN integration. The plugin translates the cloud management system concept. Cloud management system concept of the logical network. Configuration stored in CMS configuration data in a CMS speech. Into a intermediate representation of the style by OVN. OVN not one database NBDB container will store the logical network configuration passed by CMS level. Store the network configuration passed by CMS. The CMS passed from the authority. This will store the scapegoat OVN southbound database SBD controller
store the physical and logical network configuration. Physical and logical network configuration. State physical and network, physical and logical configuration. State for concept, OpenShift vSwitch oriented on each node, including table that wind the northbound diamond. Can be OVN northbound diamond. OVN north diamond. OVN north diamond. Not it. This is the intermediary client between NVD container and SPD container. Intermediate client. It translates the logical network configuration into the term of conventional networking concept taken from the NVD container into a logical data path into logical data path in the SBDB container. The container name for the OVN North D lemon is North D and it's run in the OVN Q node port. OVN controller. This is the OVN again that interact with OVS and hypervisor for any information or update that is needed for the SBDB container. The, the OVN controller reads the logical flow from the SBDB container, translate them into open flows, and sends them to the nodes. OVS daemon. The container name is OVN controller and it's run in the OVN cube node. OVN northbound bit of NVDB का NVDB का मतलब configure that source network ना CMS से जो भेजा हुआ configuration होता है उसको store कर देता है logical network को और SVDB साउथबाउंड डेटाबेस स्टोर करता है फिजिकल एंड वर्चुअल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन स्टेट को ठीक है each for system on each node including a table that happens also on given data it's implement client between the north one DB and south one DB here. So that's logical network for configuration term convert into this network concept convert become OVN controller OVN controller this is the OVN agent. This is the OVN agent that interacts with OBS and hypervisor. OVN agent that interact with OVN hypervisor, OBS hypervisor. So open virtual switch hypervisor and hypervisor. For any information or update that is needed for SPDB container that is needed SBDB container, southbound database container, the OVN controller read the logical flow from the SBDB container, translate them into open flows and send them to the nodes OVS daemon. The container name is OVN controller and it runs the OVN queue node port. One controller that interacts with the OBS and the hypervisor. OVN controller interacts with the OVN and hypervisor. For any information or update that is needed for SBDB container. The OVN controller, this is the
Store the logical network configuration based on CMS. Store the physical and logical network configuration state for open services system for each node. Okay. Not one. This is the intermediate client between NVD and admin container. It is translate logical network configuration term of convention of taken from the computer. OVN controlling. This is the OVN agent that interact with OBS and hypervisor. OBS and hypervisor. The OVN switch, OVN controller. Northbound database and southbound database. It's runs on every node. ठीक है. For any information or update that is needed for that over afterwards use the local. OVN northbound, OVN north D and northbound database and southbound database runs on each on each node in the cluster, and each node runs. ठीक है. Northbound DB, southbound DB, and north D and southbound database and northbound database. It's run for the each node in the cluster and mostly contain the process information that is local on that nodes. It will contain the process on each nodes, also local. The OVN northbound database has the logical network configuration. Northbound database has the logical network configuration passed down into it by the
क्लाउड मैनेजमेंट सिस्टम किसके द्वारा आई? Passed by the cloud management system CMS. The OVN northbound database contain the current desired state. It's a northbound database that has logical network configuration passed by the CMS. ठीक है. The OVN northbound database contains the northbound OVN northbound database contain the current desired state of the network present as the collection of logical ports, logical switches, logical routers, and more. The OVN North D. The OVN North D contain a concept of OVN northbound database and the OVN southbound database. It translate the logical network configuration in terms of conventional network concept taken from the OVN northbound database. In the logical data path flows in the OVN southbound database. The OVN northbound database has the physical and logical representation of the network and binding the table that links them together. It contains the classic information of the node and other containers. OVN southbound database physically and logical representation of the network binding the table that link together. It contains the classic information of the node and other construct like remote transient switches port that are required to connect to the other nodes in the cluster. The OVN southbound database also contains all the logical flow. The logical flow are shared with OVN controller process that contains all the logical flow. The logical flow are shared with the OVN controller process that runs on each node and the OVN controller turns those into open flow runs to program open switch. The Kubernetes controller plane node contain two OVN queue controller plane nodes on the separate node. ऊपर जो लिखा था ना ऊपर थोड़ा तो वही चीज जो थोड़ा डिटेल में लिख दिया नीचे द कुबरनेटिस ये ओवीएन साउथबाउंड हमने ऊपर पढ़ा था ओवीएन साउथबाउंड यहाँ पे देखो ओवीएन साउथबाउंड restore the physical and logical network configuration state on that we switch sorry on the trans on that we switch OBS system to the each nodes include that table that divide the it contains the classic information on the virtual Kubernetes process prerequisite access to cluster as usual with the cluster admin role. Open CLI installed.
प्रोसीजर कैसे रन कर सकते हैं? रन द फॉलोइंग कमांड टू गेट ऑल the sources endpoint and config map in the OVN-Kubernetes project repository. OVN get get all EP CM hyphen OpenShift OpenKubernetes example output. Warning this. I'm going to ready. The name star IP none. This config endpoints, replica set, deployment, after service, and your daemon set, deployment, and replica set, and endpoints, and config map. The config map Kubernetes CA. There is a one OVN cube not pod for each node in the cluster. The OVN not pod for each cluster. OVN not pod for each node in the cluster. The OVN config map as the OpenShift container platform phone. List all the containers in the open. Doing the following. List all the containers. OC get pod, OVN cube node, the VC is path, is pack container name of the container. Example. The OC logging union. The cube node pod is made of several containers. It's responsible for hosting the North1 database. South1 database, the North daemon, North D container, OVN controller, and kube controller. The OVN kube controller contain the watches for API object like pod, ingress, IP, namespace, service, endpoint, ingress, firewall, and network policies. It is also responsible for allocating pod IP from the available subnet. List all the containers OVN kube controller plane pod by running OVN get pod OVN cube controller plane hyphen O JSON path is pair container name dot namespace cube RBC proxy O1 cluster manager OVN cube controller plane pod have container that resist on each OpenShift container platform node. The OVN cube cluster manager container allocates pod subnet transitions, switches, subnet IP, and join switches. Listing the OVN Kubernetes North1 database center. OVN get NPO hyphen namespace. PO means PRSR. OVN control North1 database. North1 database center. ऊपर हमने क्या करा था? Resources get करा था फाइल. North1 database में कैसे कनेक्ट हो? ठीक है. Okay, to list the pod with node information, run the following commands. Copy to clipboard, toggle word wrap.
list the pod with node information. List the pod, list the nodes, list the pods with the node information. With the node information. This node pod is deployed. On this master one node, this pod is deployed. This node provide this navigate into a pod to look at the northbound database by line. Navigate into pod to look at the northbound database. OC RHSC-C NBDB namespace दिया अब मैंने ओके और दे दो to run the following command to show all the objects into the northbound database. Following command show all the objects OVN-NB show. The output is too long to list here. The list include the NAT rules, logical switches, and load balancer, and so on. Around the NVN OVN-NBCTL show. इसके बाद you can narrow down the focus of a specific component by using some of the following optional command. Run the following command to show all the logical routers. Show the logical routers by using OCEXI-namespace IT interactive mode and OVN-Q-C like that. Example, you can see this source. Show list of logical routers. Note on this output, you can see there is a router for each node plus on OVN cluster route. And the following command show the logical switches -OCM VXC 8 OVC node 20 cube node -C NVD इसमें क्या था northbound -D LR list LS list logical feature logical this one. In the following, show the list of load balancers. OC, EXC,
CEC hyphen OpenShift OVN-Kubernetes OVN-Kubernetes Wi-Fi preference. Throw the load on user. LB switches LS switches list list of routers. Below in the last possible LB means load balanced. PU to IP VIP LV. From the truncate output, you can see there are many open Kubernetes load when the load balancer open the represented by the services. While you now display the optional variable with the command of display the optional variable definition. Have command line argument of OVN NVDCL exam and the not one database. ये कुछ कुछ कमांड्स हैं इनको भी हम भी देखें ठीक है कितना रह गया तो डायग्राम में ये डायग्राम वेबसाइट से देखेंगे मैं थ्योरियां होंगी अडाप्ट वगैरह ट्रबल शूटिंग ओवेन कुबरनेटिस ट्रबल शूटिंग थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग का भी देख लें ठीक है तो बड़ा है ओके so we will meet in 30 minutes after the 30 minutes take a break
ठीक है, वापस आते हैं। तो हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? काफी चीजें, हम इतनी चीजें नहीं पढ़ेंगे। हमने आर्किटेक्चर पढ़ लिया, अब उसका डायग्राम भी समझ लेंगे, है ना? तो डायग्राम कैसे काम कर रहा है, ये सारे पॉड वगैरह उनको एक बार समझ लेते हैं, क्या चीजें हैं, कैसे काम कर रहे हैं चीजें, है ना? हम्म, तो हम यहाँ पे आ गए थे। ठीक है, तो ये कमांड आर्गुमेंट ओबीएन, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है कुछ कमांड्स ओबीएन एनबी, OBN NB CTL to examine northbound database center. Northbound database center को expand वगैरह करने के लिए कमांड है। The following table describe the command line argument that can be used with OBN NB CTL to examine the content of the northbound database. Content of the northbound database. ठीक है, राइट। लेट्स एक चीज मैं करके लेता हूँ अभी। मैं अपना वेबकैम ओपन करके देखता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। थोड़ा सा मेरा वेबकैम, मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, अभी बढ़िया, है ना? परफेक्ट। तो यही चीजें हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ लिए नोट, बहुत सी चीजें हमने ध्यान में रखते हुए भी पढ़ी हुई। ठीक, अभी तुमको को डिस्कस कर लेता हूँ तो क्या, हाँ, मैं एक बार देख भी लेता हूँ कैसा दिख रहा है ना। ओके, because you need to open करके वैसे परफेक्टली है ये मत चैनल। ठीक है, ठीक है, पर्पस हमने पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया ना, पर्पस वगैरह क्यों यूज करते हैं पर्पस या फिर कोई स्टैक के नहीं हमने पढ़ा, इनकी जरूरत नहीं होती, सब कुछ पढ़ लिया। अभी हम पूर्ण आर्किटेक्चर भी पढ़ लें, पहले हम कुछ बेसिक इसके कमांड, ये मैंने इसका डायग्राम ले लिया है ना, तो बस पे फिलहाल में चलते हैं ना। तो ये है NBCDL, क्या क्या कर सकते हैं? NBCDL is the argument used to indicate the content of the node. NBCDL command to examine the content of the node. Open a report cell in the pod. You want to view the content of and contents of and the rule run the OVN shell. The code wants to view the content of content. So in command line argument again the node NB OBN NB CTL OBN क्या OBN NB OVN NB CTL NVCTL all overview of the northbound database, all overview of the northbound database content of a specific node,
उस नोड के अंदर जाके ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका नॉट ऑन डेटाबेस से कंटेंट रिलेट जितना भी कंटेंट होगा वो आएगा। यही बताना चाह रही है ये कमांड। ठीक, ये एग्जीक्यूट होगी इनसाइड द पॉड, इनसाइड द नोड, इस स्पेसिफिक नोड के अंदर। तो OBN NB CTL शो switch or router show the detail of associate with the specific switch or router, show the detail associated with the specific router। यूज करने के लिए हम यूज करते हैं भी स्विच और राउटर। वो आपको अच्छा लगे। ये तो हमने देख ली। इसको लिस्ट ऑफ राउटर, शो द लिस्ट ऑफ राउटर्स, ये भी देख लिया। NVLBRP राउटर्स यूजिंग द राउटर शो द राउटर पोर्ट्स। ठीक है, ELB लिस्ट ऑफ राउटर पोर्ट्स एंड हाइफन लिस्ट, ये फुल फॉर्म है इसका। उसके बाद NBCTL LRNA NAT हाइफन लिस्ट, show the network address, show the network address, show the network address router, show the network address translate detail from the specific router। उसके बाद में शेड्यूल लिस्ट, शो द लॉजिकल स्विचेस, स्विचेस को शो करने के लिए है। ठीक है, LBSS switches information load balancer भी देंगे। Show the list of load balancers, listing of OVN Kubernetes southbound database center, ये था northbound database centers ना, the southbound पर है। Each node is controlled by the OVN Kubernetes, each node is controlled by each node controlled by the OVN kube controller container running in the kube OVN kube node pod on the node. Each node is controlled by OVN Kubernetes OVN kube controller container running on the node pod. To understand the OVN logical networking entities, you need to examine the northbound database OVN logical network entities. So you need to examine the northbound database that is running on container inside the Kubernetes pod. Okay. ठीक है, तो एक्सेस होना चाहिए, ये प्रीडिफाइन है इसमें। एडमिन रोल्स एक्सेस होना चाहिए, ओपन CLI इंस्टॉल, ओसी इंस्टॉल होना चाहिए। तो लिस्ट अभी कौन से बॉन्ड पे काम कर रही? नॉर्थ बॉन्ड, ये है साउथ बॉन्ड। नॉर्थ बॉन्ड देख लिया मैं, साउथ बॉन्ड है। साउथ बॉन्ड के लिए द फॉलोइंग कमांड, लिस्ट द पॉड हाइफन गेट, इस नेम स्पेस में ये पॉड, PO मीन्स होता है पॉड, NO मीन्स होता है नोड। ठीक है, लिस्ट ऑफ द पॉड विद द नोड इंफॉर्मेशन, रन द फॉलोइंग। नोड की इंफॉर्मेशन चाहिए, हाइफन नोड ऐड कर दो, पॉड्स एसोसिएटेड नेम स्पेस पॉड। तो ये नोड आ जाएंगे, ये नोड और ये पॉड। ठीक, इस नोड में ये पॉड पड़े हुए, ये अच्छा। नेविगेट इनटू पॉड टू लुक द साउथबाउंड डेटाबेस, साउथबाउंड डेटाबेस देखने के लिए OC run hyphen this
हाँ ये प्रैक्टिकल होता। मैं यार सिस्टम की रैम बढ़वाना चाह रहा हूँ, बट सिस्टम की रैम बढ़ नहीं पा रही, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है इस चक्कर में पढ़ने की वजह से। और एक और अपना चैनल है, वो मैं रिवील करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैनल पर रिवील करूंगा, ठीक है। वहां पर स्पेसिफिक कंटेंट देना, ब्यूटीफुल कंटेंट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो फिर हम दोनों चैनल को कंबाइन करके चलें, ठीक है। ठीक, दैट्स इट। Run the following command to show all the objects in the southbound database. All the objects in the, ठीक है, example output here like classes, host name, 179B8067. The detailed output shown the classes and the port. Detailed output shown the classes and the ports that are attached to the classes. Port that attached to which is in case all of the router code and anything that runs like host networking. Any ports communicate out to the wider networking using source network address translate. There are IP translate into detail output shown in the classes. In classes report also it is shown. In the additional in the additional to the classes of information, in the additional its classes of information, in the additional its classes of information. देख, इसके बाद हम थोड़ा रेस्ट लेंगे, फिर दोबारा से स्टार्ट करें, ठीक है। Running the following command to display the topic option available in the, ये सेम ऊपर की कमांड है, बस वहां पे वो था अपना नॉर्थ बाउंड, ये है अपना साउथ बाउंड, बेटा बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। यही वही कमांड है, हम इसमें क्या देते हैं, OVN SBCDL, ये देखो। Run the following command to display the option available with the command this. Run the display the optional options available with the कमांड, इस कमांड को एग्जीक्यूट करने में ऑप्शन पता चल गया है, ठीक है। लाइन कमांड लाइन आर्गुमेंट OVN SBCTL, वहां पे था क्यूब CTL था, यहाँ पे था अपना NBCTL नॉर्थ बाउंड, यहाँ पे था SBCTL साउथ बाउंड, समझ गए। हम्म so the following describe command argument that can be used to NVCTL to examine the content of that southbound database. NVCTL show, NVCTL listed this. Now, OVN Kubernetes logical architecture क्या होता है? Logical. The OVN is the network virtualization solution. It creates a logical switches and routers. OVN is a network virtualization solution. It creates the logical switches and routers. Logical switches and router. OVN क्या है? वर्चुअल नेटवर्क है, ठीक है। ये क्रिएट क्या करता है? ये क्रिएट करता है लॉजिकल लॉजिकल switches and routers. Logical switches and router. It is creating logical switches and routers. So these switches and router interconnected. These switches and router interconnected to create any network topology. ये जो switches नेटवर्क जो हमने क्रिएट करे ना, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसके थ्रू हम नेटवर्क टोपोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। when you run OVN cube trace with the log label set 2 or 5, then OVN Kubernetes logical component exposed. The logical component exposed.
The following diagram show how the router and switches are connected in OpenShift container platform. ये राउटर और स्विचेस कैसे कनेक्ट होता है ना ओसीपी में। ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम थोड़ा सा कट गया है, इसमें नहीं सही से आया। View the image, no new tab, no connected, ये है ना आगे पूरा। The key component involving in the packet processing. Switch node 1, external switch, gateway router, join switch, transient switch, router, logical switch, pod 1, pod 2, pod n, number of podded पड़े रहते हैं। उसके बाद external switches, सेम इम्प्लीमेंटेशन, बस ये ट्रांजिएंट स्विच लगा हुआ है इसमें। अब इसको एक बार पढ़ के देखते हैं तो ज्यादा हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, गेटवे राउटर, गेटवे राउटर क्या होता है? गेटवे राउटर ये है, गेटवे राउटर जो कनेक्टेड है एक्सटर्नल स्विचेस से, एक्सटर्नल स्विच से कनेक्ट है। नोड नेम, node name. The gateway router, sometimes called L3 gateway router, are typically used between the distributed routers and physical network. यहाँ पे यूज होता है, they are typically used between the distributed router and physical router. Distributed router and physical router के बीच में यूज होता है। The gateway router include their logical path. Port are bounded to the physical location, not distributed or classes. The path gateway router includes the logical path. Ports are bounded to the physical location, not distributed or classes. The patch port on their router are known as 13 gateway ports. सो अब अपन थोड़ी इस सेशन को एंड करते हैं, एक और पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। लाइफ ज्यादा बड़ी होगी गाइस, ठीक है। अभी अपन देख लेते हैं लाइफ कितने मिनट की हो चुकी है ना। अभी 2 घंटे की लाइफ, 2 घंटे में इतना बहुत है ना, इतना बहुत हमने सीख लिया, ठीक है। इस डायग्राम को हम नेक्स्ट में सीख समझ लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले में इस डायग्राम को, ठीक। राउटर गेटवे बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्विच के बीच में, देखो यहाँ पे लिखा ना है डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर एंड फिजिकल नेटवर्क के बीच में ये काम करता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ और बाकी रहता है, वो काफी है थ्योरी। फिर इंस्टॉलेशन वगैरह देख लेंगे, ठीक है, कैसे कैसे करते हैं। अभी प्रैक्टिकल हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि मेरा सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं है, और अपने पास एक और चैनल है, उस चैनल पे भी मेरे को कंटेंट अपलोड करना पड़ता है, ऐसे ही बनाता हूँ सेम सिस्टम से, ठीक है। अभी वो नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों के पास, और वो मैं जल्दी रिवील करूंगा कि क्या यूज करता हूँ, तो कौन सा सिस्टम यूज करता हूँ। तो थैंक यू, तब तक के लिए वाइंड अप करते हैं इस लाइव को, और नेक्स्ट टॉपिक्स पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू। स्ट्रीम